Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. Today we are going to start our new chapter, that is list manipulation. In this video we will discuss what are Python lists and how we can see lists are mutable and how we can create a list and what are the nested lists and how we can access individual elements of a list. First, what are Python lists? Python lists are used to store a list of values of any type. Values of any type means the list element can be a integer, can be a float type value, can be a string type value, or even it can be a list also. Next is lists are mutable. That means we can modify the elements of a list in place. In place means in the existing list. Python and it will not create a new list. In Python, it will not create a new list if we modify an element of the list. Next is list elements are placed within the square brackets and all these elements are separated by commas. Here are some examples of list. First, you can see there is no element in this list. So it is an empty list. In next one, there are two elements and both the elements are of integer type. So it is a list of integers. In the next, there are three elements in which first element is integer type and the other two elements are of float type. So it is a list of numbers. Next one is there are three elements and all these elements are of characters, or you can say a string with single character. So it is a list of characters. Next is it also contains three elements and all the three elements are of same type, that is a string. So it is a list of a string. In the last but not the least, there are 5 elements in which 1 and 6 are of integer type and 4.5 is a floating type and a and 0 are of string type. So it is a list which contains different types of values. All the elements have different data types. So it is a list of mixed value types. Next is how we can see list or mutable. Here you can see L is a list and it contains 4 elements and all the 4 elements are of string type. First is Jan at index 0, at index 1 is Feb and March and April. ID of this is same. ID of L is this. Let's see with the help of example to understand this example. Now I have opened Python IDE. In interactive mode, am I taking a list LST and it contains elements Sunday, next is MON Monday and next one is TUE. There are 3 elements and ID of this list is 507334448. Now I am modifying element of the list at index 1. अभी क्या है at index 1 पे MON. Now I am assigning it, I am modifying it to Monday to Wednesday, WED. Now check our list LST is changed. At the index 1, MON is modified to is changed to WED. Now again check the ID of LST. It will remain same. Before modifying it, the ID of is this, ID of the LST, and after modifying the list, the ID of the list will remain same. That means lists are mutable. We can change the element of the list in place. In place का क्या मतलब है कि आप इसी जो existing ID है उसी ID के अंदर आप change कर सकते हैं किसी भी position पे. But strings are immutable. We can see an example.
Suppose I am taking a string hello. Now if I am trying to modify it, then it will show error. At index 2 HEL, ये क्या है, lower case L है, and now I am assigning it, I am changing it to upper case L, so it will display error. That means strings are immutable. We can't change the strings. Next is creating list. To create a list, put all the values within the square brackets and separated by commas, and these square brackets indicates start and end of the list. Syntax क्या है? List name equals to all the values are put within the square brackets and separated by commas. Next is, if we have to create a empty list, then what will be the syntax? List name equals to empty square brackets. There is no value within the square bracket. Let's do practically. LST equals to empty. There is no element within the square brackets. That means it is a empty list, and the length of empty list is 0, and we can check by using the len function. Its length is 0. ये क्या रिटर्न करेगा? 0. If suppose I am taking another list 1, 3, here 2 elements and both are of integer types, and its length is 2. Next is nested lists. तो nested lists क्या होता है? A list, if a list have an element which is itself a list, then the list is called a nested list. Here you can see an example. L is a list, and 2, 5, 7, 8 and 9. 7, 8 क्या है? 7 at the index 2. 7, 8 is an element and it is of type list. ये किस टाइप का एलिमेंट है? लिस्ट टाइप का, and it is considered as a one element. Here length of L is 4, 2, 5, 1, 2, 3 and 4. It is considered as a one element. If we want to access this element, तो कौन सी इंडेक्स पे है? 0, 1 and 2. सेकेंड इंडेक्स पे L of 2 कितना आ जाएगा? 7, 8 and it is a list. If we want to access एट द इंडेक्स 2 पे जो लिस्ट है, उस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमें वो एक्सेस करना है. तो पहले इस लिस्ट को एक्सेस करना होगा. इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? एल ऑफ टू जो आपकी मेन लिस्ट है एल, जो पेरेंट लिस्ट है आपकी एल, उसकी इंडेक्स 2 पे क्या है? ये पूरी लिस्ट 7, 8. ठीक है, एल ऑफ 2 से हमें क्या मिलेगा? 7, 8. अब 7, 8 में से भी हमें क्या करना है? जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है. तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? एल ऑफ 2 और फिर 0. तो हमने कहाँ से एक्सेस किया? वो एल ऑफ 2 और उस पे 0 में क्या मिलेगा? 7 एंड एल ऑफ 2 1 से क्या एक्सेस होगा? 8. एल ऑफ 2 इस पूरे के लिए और फिर एल ऑफ 2 के 1 पे 0 और ये 1, तो 1 पे क्या है? 8. और इफ आई एम राइटिंग एल ऑफ 0 तो क्या मिलेगा? 2. लेट्स सी विथ सम मोर एग्जांपल. If a list A, B, C, D, it is a list one, 2. Clear? It is a list. Now the length of this list is 4, 1, 2, 3, 4. This list element is considered as a one element. Okay.
So length of this list is 4. Now I have to access this one. Yeah, I have to access this complete list. तो it is at index 2. और कौन सी लिस्ट के इंडेक्स 2 पे है? जो मेन लिस्ट है L. If I am writing L of 2, then it will access the element 1, 2. Clear? It is a list. If I want to access this element 1, तो मुझे पहले क्या करना होगा? पहले मुझे इस पूरी लिस्ट को एक्सेस करना होगा, इस एलिमेंट को. इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना होगा? L of 2. L of 2 में क्या रिटर्न करेगा? 1, 2. अब इस लिस्ट में से हमें क्या एक्सेस करना है? 1. तो ये कौन सी पोजीशन पे है इस लिस्ट की? 0th पोजीशन पे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0. तो कौन सा एलिमेंट एक्सेस होके आया? 1. ओके. इफ आई वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट 2, तो मुझे क्या करना होगा? इस पूरी लिस्ट को एक्सेस करने के लिए तो क्या करना होगा? L of 2. ठीक है जी, L of 2 से तो ये पूरी एक्सेस होगी लिस्ट. अब इसके 2 पे जाना है. इसके 2 पे जाने के लिए कौन से इंडेक्स पे है ये इस लिस्ट के? ये 0 पे है, ये 1 इंडेक्स पे है. तो अब हमें क्या लिखना होगा? 1. तो कौन सा एक्सेस हो गया? एलिमेंट 2. और सपोज इफ आई एम राइटिंग L of 0, L कौन सी लिस्ट है हमारी? मेन लिस्ट जो है L. इसकी 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? A. तो क्या दिखा देगा? कैरेक्टर A. अब सपोज इफ आई एम राइटिंग L of 1, L of L at index 1 पे क्या कैरेक्टर है? B. तो क्या एलिमेंट आ जाएगा? B कैरेक्टर. क्लियर? नेक्स्ट वन इज accessing list. Now we have to access individual element of the list. We can access the individual elements of list through their indexes, and to access the elements we can use forward indexing and as well as backward indexing. And forward indexing starts with 0 and up to the 0, 1, 2 and up to the last index क्या होगा? length minus 1. And backward indexing start with -1 and up to the minus length. Like strings, if we give index out of range when we access individual elements, Python will raise index error. Okay, Python will raise index error. Let's see. This is the list. Here two elements are present. At index 0 element is 1 and at index 1 is element is 3. Okay. If I want to access an element at the index 3 या at the index 2, 2 पे तो कोई element नहीं है, तो it will give error. It will give index error, list index out of range. Clear? Third. Now syntax to access list: list name and index within square brackets. This is used to access individual elements at the specified index. आप जो भी इंडेक्स से मेंशन करेंगे, suppose your list is L having the 4 elements, then L of 1 means it access the element at the index 1. Next one is list elements two-way indexing. Now in Python there two-way indexing is used. In C and C++ we have used array, है ना? और array में क्या होता था? Only one way indexing होती थी and indexing start with 0. But in Python there are two-way indexing, forward indexing as well as backward indexing. Here you can see L is a list and it contains 6 elements P, Y, T, H, O, N. These 6 elements are present in the list L. And when we use forward indexing, it starts with 0 and कहाँ तक चलेगी? up to the length minus 1. इसकी length कितनी है? 6. Length of list क्या होती है? number of elements present in the list. तो इसकी length कितनी है? 6. तो 6 minus 1 कितना होगा? 5. That is length minus 1. And backward indexing starts with -1
नेक्स्ट इज -1 -2 एंड अप टू तो कहाँ तक चलेगी, माइनस लेंथ तक। इसकी लेंथ 6 है तो ये कितना हो जाएगा, -6। क्लियर। नाउ there are two ways to access the element p. By using forward indexing, I am writing L of 0, and when we use backward indexing, then we write L of -6. तो इस p को एक्सेस करने के लिए टू वेज हैं। बाय यूजिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हम क्या यूज करेंगे, L of 0, एंड बाय यूजिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग वी यूज L of -6. In it is a similar case of y. To access y in forward indexing we use L of 1, and in backward indexing that is L of -5. ये दोनों ही इंडेक्स क्या करेंगे, किसको एक्सेस करेंगे, y एलिमेंट को। क्लियर। एंड दिस प्रोसीजर इज फॉलो टू द rest of the elements. And this is the example. Now let's do practically. For example, data is a list. And it contains 6 elements. Here I forgot to write double quotes. ठीक है, यदि आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को एनक्लोज करना, तो आपको जो से क्लोज करना है स्टार्टिंग डबल कोट से है, तो आपको एंडिंग कोट्स भी डबल कोट्स ही यूज करने होंगे। क्लियर। नो, दिस इज अ लिस्ट। क्या नाम है इस लिस्ट का, डेटा, and it contains 6 elements in which 4 elements are of integer type and 2 elements are of string type. Now, if I want to access the element at index 0, then it will return 1. 0th index पे क्या है, 1. If I want to access list element at index 5, it will return hello, क्योंकि इसका कितना इंडेक्स है, 0, फिर 1, 2, 3, 4 and 5. Here I am using forward indexing. If I want to access this hello element but by using backward indexing, then I am writing -1. Then I have to write -1. तो data of -1 क्या है, उस पे hello string. Clear? और suppose if I want to access this element by using backward indexing, तो ये कितना होगा, data of minus length, और length कितनी है इसकी, 6, तो -6, it will return 1. And we can check length of this list by using the len function, and it will return 6. And this is the example. Data क्या है, data is a list and it contains 4 elements, and all these 4 elements are separated by a comma, and all these 4 elements are of integer type. ठीक है, if we want to access the element at the index 2, then this list name and write index within the square bracket. इंडेक्स कितना है, 2, तो इंडेक्स 2 पे क्या है, 0 पे 10, 1 पे 23 एंड 2 पे 35. देन इट विल रिटर्न 35. इफ वी वांट टू एक्सेस द एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्स, अब देखो इसका इंडेक्स कितना है, 0, और इसका 46 का इंडेक्स कितना है, 3. अब आउट ऑफ बाउंड आप जाएंगे, 3 से बाहर जाएंगे, तो 3 से बाहर कितना हो गया, 4 है, ये इंडेक्स कितना है, 4. दैट मीन्स 4 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं है, then it will display index error, list index out of range. If you like my video, then like, comments and share my video, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.